नाम Aliza Mehdi है. I'm the owner of Aliza Mehdi Beauty Lounge located in Valencia. Initially, मैं वैसे to be honest, I'm a LUMS grad and in accounting and finance. ये भी बहुत लोग पूछते हैं कि कैसे shift किया. But फिर मैंने अपनी professional degree ली है from the London College of Makeup और उसके बाद here we are today. It's been 3 years since I started my salon और honestly I've studied business और जो response है it's phenomenal. I can't imagine कि इतना अच्छा response कैसे मिल रहा है, but alhamdulillah, it's been great. Fashion represents different aspects of your personality. I think emotions play a huge role क्योंकि मैं client perspective से ज़्यादा बात करूँगी from a everyday person's perspective. तो emotions होती हैं, they change day to day. इसी तरह आपका fashion sense और आपके जो आप दुनिया को दिखाना चाह रहे होते हो वो भी change हो रहा होता है day to day. So for example, one day I'll be feeling bold and fierce तो मैं bold liner लगा लूँगी, bold lip कर लूँगी, hair do bold तरीके से कर लूँगी. But then one day I'll be feeling subtle, इतनी energy नहीं होगी, so I'll do my fashion sense accordingly कि मैं blend in करूँ. So for me, it does represent your personality, displays your personality, but in depth, it is who you want to be in front of the world. So it can change every day, and I guess so does the fashion. Makeup is the enhancement of facial aesthetics particularly. आजकल तो वैसे ही आपको पता है क्लीन मेकअप आ रहा है, रेडियंस ज़्यादा प्रमोट की जा रही है, तो आपके जो फीचर्स होते हैं उनको इन्हांस करने के लिए यूज़ किया जाता है. पहले होता था वन मेकअप फॉर एवरीबडी, तो वो आपको लग रहा होता था कि हर कोई एक जैसा लग रहा है. बट नाउ एवरीबडीज़ फीचर्स आर फर्दर इन्हांस्ड यूजिंग मेकअप. आई थिंक अ गुड मेकअप आर्टिस्ट इज़ अ पर्सन हु हैज़ एम्पैथी. हमारी सोसाइटी में थोड़ा सिखाया जाता है कि इतने एक्सप्रेसिव लोग नहीं होते, वो चाह कुछ रहे होते हैं बट बता कुछ रहे होते हैं या हाइड कर रहे होते हैं कि हमें नहीं पता. तो यू नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एक्सप्रेशन ऑन योर क्लाइंट्स फेस टू इंश्योर कि जो उन्हें चाहिए इवेंचुअली वो मिल जाए. आपने सिर्फ उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो मीट नहीं करनी, एक्सीड भी करनी है, और उसके लिए एम्पैथी बहुत ज़रूरी है. तो अगर हम गिनने में आएँ तो आप कह दोगे कि देयर इज़ अ डे मेकअप, देयर इज़ अ नाइट मेकअप, इवनिंग मेकअप, ब्राइडल मेकअप, फिर उसमें डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं. यू हैव अ स्मोकी आई, यू हैव अ कट क्रीज, ये सारी टाइप्स ऑफ मेकअप्स हैं. लेकिन क्योंकि यूर एन आर्टिस्ट तो इसमें ये होता है कि जब आप फ्यूजन क्रिएट करते हैं तो ही बेस्ट सॉर्ट ऑफ मेकअप रिवील होता है. बहुत ज़रूरी है कि ना आपकी जो बेसिक नॉलेज है ना वो बहुत स्ट्रांग हो. ये मुझे सिखाया गया था इन लंदन कॉलेज ऑफ मेकअप जब मैं ट्रेनिंग के लिए गई थी. क्योंकि देखिए, अगर आपकी बेसिक्स की नॉलेज बहुत स्ट्रांग है ना तो उसके बाद इट्स वेरी इजी फॉर यू कि आप क्लाइंट के मुताबिक भी कर लें, अपने मेकअप को थोड़ा सा मिक्स एंड मैच भी कर लें और एंड पे जो रिज़ल्ट हो वो एक आर्टिस्टिकली ब्यूटीफुल चीज़ आए. तो what I do is, like for example, a lot of customers come to me and say कि ना आपने मेरा contour नहीं करना because my face is already quite skinny. तो मैं उन्हें ये बताती हूँ कि ना contour isn't just to make your face skinnier, लेकिन हमारा obviously because people don't know that, तो वो कहते हैं कि it's just to make yourself skinny. But with contour you can actually make a person's face bigger as well. तो आपने देखना होता है कि client को क्या चाहिए and what will look good on them. So based on empathy, I will ask them and see कि उन्हें क्या चाहिए. And then afterwards, जो fusion होती है वो मैं ये करती हूँ कि the options that I'll give them will be the ones that will suit them. तो वो फिर कहते हैं आप बताएं अच्छा लगेगा या नहीं. तो I'll be like, जो मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ वो आप पे अच्छा ही लगेगा, इसमें मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ कि नंबर 1 चूज़ करना है या नंबर 2.
तो you really need to bring everything together to ensure कि जो look आपको है वो जब client देखे तो वो कहे oh wow you know I didn't think कि मैं इस तरह लग सकती थी. ओवरऑल मैं पाकिस्तानी फ़ैशन इंडस्ट्री को इन अ गुड लाइट देखती हूँ. पहले कुछ साल पहले तक मे बी नॉट, बट अब आप देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन एक्सटर्नली इंटरनेशनली भी आ रही है. एंड अब our names are connected to the big names जो पहले से in market थे. So I think it's going quite far and it's on the right track now and it's going to go quite far इंशाल्लाह. मैंने देखा है कि कुछ अरसे पहले तक फैशन इंडस्ट्री हमारी बहुत बेसिक होती थी. उसमें one thing fits all type of thing थी. एक ही टीम होती थी, वो हर किसी को एक ही जैसा करा रही होती थी. But now we have a lot more categories. We have stylists, we have hair artists जो separately hair artists हैं, we have makeup artists that are separately makeup artists. Then you have overall groomers, you have aesthetic teams, सारा कुछ इस तरह का होता है. I think बहुत ज़्यादा opportunities भी create हुई हैं और उसकी वजह से ये है कि जो हर चीज़ है उसमें perfection आ गई है. Because you know like one person cannot do everything perfectly. शायद पहले के standards के लिहाज से हम कर सकते थे, but अब ये होता है कि हर field में I think बहुत perfection आ गई है. तो competition भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है, but the chance to grow भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. पाकिस्तानी इंडस्ट्री ने इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है. जब मैं when I was studying in the London College of Makeup तो उधर we had people from a lot of cultures and a lot of countries. तो एक पॉइंट आया था जब हम ब्राइडल मेकअप कर रहे थे, हमने यूरोपियन ब्राइडल मेकअप सीखना था, बट देन दे शोड अस सम पाकिस्तानी ब्राइड्स एज वेल. तो कलेक्टिवली सब ने कहा था कि पाकिस्तानी ब्राइड्स आर सो ब्यूटिफुली डन और हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी ब्राइडल मेकअप सीखें, बिकॉज दैट काइंड ऑफ ब्रिंग्स टुगेदर ऑल मेकअप टेक्निक्स. और एक मतलब आई डोंट थिंक इट्स विजिबल एनीवेयर एल्स. तो सब ने आके मुझे, एंड आई हैड एक आधी और पाकिस्तानी भी थी, तो उन्होंने कहा था कि यू नो योर मेकअप इट्स रियली अमेजिंग. हमने अब जब देखा है तो we're like ये मेकअप हमें भी आना चाहिए. Fashion and styling are both closely knit. So you can do a perfect makeup, but at the same time, if your styling isn't on point or according to what your makeup requires, then you're not going to be able to send out the message that you want to send. So I would always say that not just styling, but everything else that's included in styling, yeah, like your attire, your accessories, your hairdo, everything is really important to ensure that we get an overall look. Because we get into a shoot or into a bridal makeup with a certain aspect in mind, and we make sure that we know what the bride wants, right? So if I give her a perfect look, but my stylist can't give her a perfect hairdo, or generally she doesn't have the perfect clothes to match that look, then I'm not going to get what I want, and neither will she. Fashion is a lot of fun. It's fun for those who enjoy it and can do it. I personally really enjoy my job. This is why I switched fields, because this is something that I enjoy. It excites me, and it excites the person who's getting it done as well as my team. So I think yes, it's a lot of fun.
To be honest, my initial inspiration came from my mom, who is also in a similar field, और entrepreneurship की भी वहाँ से आई when I realized that women can do great things. लेकिन I saw a gap in the market, जो मैंने पहले भी mention किया है. मैं कुछ salons में गई and I realized कि जो top पे होता है बंदा, they don't have that much knowledge of what's going on in the salon. They run it more like a business and less like a passion. वो आते भी कम है, उन्हें idea नहीं होता कि जो हम चीज़ें रख रहे हैं उनके maybe effects क्या हैं, side effects क्या हैं, उनके ingredients क्या हैं और उसका further clients पे किस तरह का result आएगा. तो मैंने कहा कि हर फील्ड में एक फॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए. वी नीड टू मेक श्योर कि देखिए अगर मेरे पास नॉलेज है देन आई विल बी एबल टू टेल माई एम्प्लॉयज़ व्हाट्स राइट एंड रॉन्ग एंड आई विल बी एबल टू टेल द कस्टमर्स व्हाट्स राइट एंड रॉन्ग फॉर देम. व्हेन आई रियलाइज कि ये गैप है देन आई रियलाइज कि हाँ, मी कमिंग फ्रॉम एन एजुकेटेड बैकग्राउंड, ऑल्दो आई एम सेइंग कि अब बहुत ज़्यादा ये चीज़ आ रही है, I decided कि इस फील्ड में आके something that I love doing as well, उसमें if I can bring about a change then I think that's a good thing. And to be honest, I love doing makeup. So when I'm done with a certain look, it excites me as much as it excites my customers, and I think that's really good. I think जिस चीज़ पे इतना फोकस नहीं किया जाता that's prep and prime. जब आप prep and prime अच्छा कर लेते हैं तो आपका canvas अच्छा बन जाता है and it becomes really easy for you to do flawless makeup, and that's the kind of makeup people are looking for nowadays. But at the same time I also feel blending is extremely important. Lots of people fear कि हमारी smoky eye ना करें because it's gonna look sharp, we're gonna look older than we actually are. लेकिन I tell them, when I'm going to do your smoky eye with the blending, which is extremely important, आप ज़्यादा soft लगोगे. You might look younger than you actually are. और वही होता है, they're surprised कि they're like, हमने जब भी smoky eye कराई है, it's always sharp edges and dark colors. But blending is so important कि वो आपके makeup को इतना perfect और effortless कर देती है कि I think that's really important. एक अच्छा मेकअप क्रिएट करने के लिए, एंड इट्स इन एवरीथिंग, आपकी आईज में, आपके फेस के लिए, इवन फॉर योर लिपस्टिक, लाइक इट नीड्स टू बी सीमलेस. बहुत इम्पॉर्टेंट है. इट्स ऑल अबाउट रिप्रेजेंटिंग योर वर्क. देखिए काम टू बी ऑनेस्ट बहुत से लोग बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन अगर प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड हो और दुनिया तक पहुंच रहा है, ओनली देन पीपल विल अप्रिशिएट योर वर्क एंड आस्क यू टू डू इट फॉर देम. इसी तरह ये होता है कि शूट्स में बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशंस भी आ जाती हैं. वो काफ़ी सारे लोगों को इट ब्रिंग्स देम टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म, so it's cross collaboration as well. Or I think one of the most exciting parts about being in this business is all this together. It's the glam that comes with all these shoots and collaborations and everything. I think social media बहुत ज़रूरी है. At this point, you need to understand कि दुनिया के लोग जो ऊपर जा रहे हैं और जा पा रहे हैं और जिस भी फील्ड में ऊपर जा रहे हैं, social media has played a huge role. I would say it has played a huge role in my salon as well. शुरू में ये होता था कि बहुत से लोगों को पता नहीं होता था कि हमारा सलोन किस जगह है, लेकिन मेरे पास कस्टमर्स सियालकोट से भी आ रहे हैं, बहावलपुर से भी आ रहे हैं, और मतलब for somebody who's only run a salon for 3 years, that's quite surprising. But they see our work, appreciate our work, और फिर वो इतनी दूर से आने को तैयार होते हैं just because of social media. So it's really important. It's all about presentation.
और अगर आप अपने ओरिजिनल काम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, तो पीपल डू अप्रिशिएट इट एंड देन दे डू कम टू यू। पहले के ज़माने में यू वुड नो कि अगर एक शूट हो भी जाता था तो उसका एक्सपोजर इतना नहीं होता था। मैक्सिमम आप मैगजीन्स में डाल रहे हैं, वो भी उन्हें मिलेंगी जिनके घर में वो मैगज़ीन जा रही है, या फिर यू पुट इट अप ऑन अ बिल बोर्ड, वो भी दोज पीपल अराउंड दैट एरिया विल गेट इट। लेकिन सोशल मीडिया से इट्स बिकम सो ईजी, तो जिनका अच्छा काम है, जस्ट विद अ क्लिक यू कैन अपलोड इट। आप अपना पेज बना लेते हो, आपका सारा काम उधर प्रेजेंटेड है, कोई हाइड नहीं कर रहे आप, ये नहीं है कि बस ब्रश्ड फ़ोटोज़ ऑन अ बिल बोर्ड टाइप ऑफ सीन होता है। तो वो इतना ज़्यादा बिजनेस इंक्रीज़ हुआ है, प्लस अ लॉट ऑफ पीपल हैव गॉटन द अपॉर्चुनिटी टू मूव फॉरवर्ड, जो कि शायद में भी एक लाखों का बिल बोर्ड नहीं अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन उनका काम बहुत अच्छा था, जो कि अब सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को पता चल रहा है। और इवेंचुअली ऑब्वियसली इसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि नए नए आर्टिस्ट आ रहे हैं। यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन 2 लोग जो बिल बोर्ड अफोर्ड कर सकते हैं या जो मैगज़ीन ऐड अफोर्ड कर सकते हैं। तो आई थिंक सोशल मीडिया हैज़ प्लेड अ ह्यूज रोल इन ब्रिंगिंग अस फॉरवर्ड एज एन इंडस्ट्री। 2022 के जो एक्चुअल ट्रेंड्स हैं जो मैंने देखा है, दैट्स क्लीन मेकअप, लुकिंग परफेक्ट ऑल द टाइम। इसलिए आप देख रहे होंगे कि परमानेंट मेकअप का बहुत ज़्यादा सीन और सामने आ रहा है। But at the same time, I think people have started to focus on the essence of makeup rather than कि एक makeup fits everybody. People have realized कि नहीं, we have an individual personality and our personality should be shown through that makeup. तो पहले आते थे everybody wanted the same kind of look, तो it was easy for artists as well जिनका मे बी इतना ज़्यादा उनके strength नहीं थी makeup में, या थी भी तो एक type के makeup में strength थी, तो वो होता था इट्स ईजी, सब एक जैसे लगे। आई मीन आई हैड अ फ्रेंड जो एक बहुत रिनाउंड सलोन से तैयार हुई थी, तो शी इज़ लाइक मैं पिक्चर्स में से 4 बार मैंने वो सेम पिक्चर्स देखी है टू फाइंड माई सेल्फ कि यार ये एक जैसी ब्राइड्स हैं, इनमें से मैं कौन हूँ। अब लेकिन एवरीबडी वांट्स द ओन सॉर्ट ऑफ लुक एंड आई थिंक दैट्स ग्रेट, क्योंकि हमें एज अ सोसाइटी हमेशा ये सिखाया गया है कि जो लोगों को पसंद आता है आप वही सर्व करें। लेकिन अब मेरे पास ब्राइड्स आ रही होती हैं या जनरली मेकअप में और भी लोग आ रहे होते हैं जो कहते हैं नहीं जी, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट वांट दिस, तो आप वो करें जो हमें पसंद है। तो इंडिविजुअलिटी और कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा आ गई है मेकअप में, और रेडियंस की तरफ ज़्यादा रुझान जा रहा है जी। No, I have not achieved my dream as yet, although mashallah the response is amazing, but this is just the start. I hope to achieve a lot more. मैंने locally भी और internationally भी I plan on opening different branches, and my ultimate dream is to create a makeup school, an educational system, क्योंकि जब मैंने ट्रेनिंग लेनी थी I realized कि पाकिस्तान में वो फॉर्मल स्कूल कोई भी नहीं है जो कि सिखाते हैं। कोर्सेज शॉर्ट कोर्सेज कराते हैं, बट इन डेप्थ जो नॉलेज चाहिए होती है वो अभी इधर नहीं मिल रही है। एंड आई होप कि इवेंचुअली आई कैन कन्वर्ट दिस इनटू एन इंस्टीट्यूशन दैट टीचेस पीपल हाउ आई हैव बीन टॉट अब्रॉड। आई थिंक डिस्कवर पाकिस्तान इज़ डूइंग वंडरफुली वेल, क्योंकि ऐसे एरियाज़ हम देख पा रहे हैं जो कि शायद लाइक आपको लगता है कि ये पाकिस्तान में तो हो ही नहीं सकते, मे बी देयर अब्रॉड। हमारा जनरल इमेज अपने ही मुल्क के बारे में लिमिटेड होता है until you see कि हाँ डिस्कवर पाकिस्तान इज़ टेकिंग यू टू सच फार एंड रिमोट एरियाज़ that are so beautiful. इट्स वंडरफुल, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन की कमी थी, हमारे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की काफ़ी कमी थी, और थ्रू डिस्कवर पाकिस्तान हम देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, अप्रिसिएशन आ रही है। एज़ यू कैन सी कि पहले इतने फॉरेनर्स पाकिस्तान नहीं आना चाहते थे टूरिज़म के लिए, हम ही बाहर जाना चाहते थे, बट नाउ यू नो अ लॉट ऑफ पीपल हु से कि नहीं जी हमने पाकिस्तान जाके उस एरिया को देखना है, एंड फॉर दैट आई अपलॉड डिस्कवर पाकिस्तान एंड द वर्क दे आर डूइंग।
Lastly, this is Aliza Mehdi. Thank you so much for having me on Fashion Diary, and keep watching Discover Pakistan.